Hello students, good morning to all of you. So here I'm going to discuss one problem from electrostats. So here we have an infinitely long positively charged wire, has a linear charge density lambda. Electron is revolving around the wire as its center with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire. Deduce the expression for its kinetic energy, and also plot the graph for kinetic energy as a function of charge density lambda. So students, basically we have a wire, infinitely long positively charged wire, and इस वायर के अराउंड में दिस वायर इज इन्फिनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर और इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी in a circular orbit, or we can say that in circular path with constant velocity. So this is some electron revolving in this circular path around this infinitely long positively charged wire. सो एज वी नो दैट कि जो पॉजिटिवली चार्ज वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है दैट इज बेसिकली लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. लेट सपोज आर इज द रेडियस ऑफ दिस orbit. This orbit is basically, this path is in a plane that is perpendicular to the wire. That plane is basically the plane of that circular path is perpendicular to the wire, and that wire is basically passing through the center of that circular path. So let's suppose r is the radius, and basically there is electric field जो कि बनाई है infinitely long wire ने. Electric field is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r. So this electron is basically experiencing electrostatic force because of this field present there. So electrostatic force is basically, as we know, that it is QE. So electron is experiencing that force. So I can write F is equal to E into capital E. So here E is the charge of the electron. So this force is providing the necessary centripetal force for this electron to revolve in the orbit or in this circular path. So we can write that this force is providing the centripetal force. The expression for centripetal force है mv square upon r. So यहाँ से हम जो है basically हमें expression deduce करना है for the kinetic energy. As you know that kinetic energy is half mv square. So we simply multiply this expression with half, with this half. तो हमारे पास ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इट इज़ लाइक, यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे वहाँ पर, सो इट इज़ ई कैपिटल ई आर अपॉन टू. सो दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इक्वेशन 1. सो हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई अपॉन टू इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो यहाँ से बेसिकली आर से जो है आर कैंसिल हो जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सॉरी स्टूडेंट्स, आर से आर जो है वो कैंसिल हो गया है. सो इट इज सिंपली ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एंड देन हमसे यहाँ पर एक्सप्रेशन के साथ साथ पूछा जा रहा है प्लॉट अ ग्राफ फॉर द काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा. सो काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है. सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज लैम्डा. सो अगर आप देखें दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट. सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा. सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. थैंक यू.